We will discuss the asymptotes in polar coordinates, but before discussing it, we will discuss the polar equation of a straight line, which is P is equal to R cos थीटा माइनस अल्फा। तो हम देखते हैं कि ये जो पोलर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है ये किस तरह से ड्राइव होती है। सपोज दिस इज अवर इनिशियल लाइन, say O x, and P be any point on the line whose polar coordinates are r theta. Clearly OP is r। अब पॉइंट P से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज इस पॉइंट को हम y कह लेते हैं और एक परपेंडिकुलर हम पी वाई के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सपोज उसकी लेंथ को हम स्मॉल p कह देते हैं, एंड दिस परपेंडिकुलर मेकिंग एन एंगल अल्फा with the initial line OX, and this line OP making an angle theta with the initial line. Clearly this angle will become theta minus alpha. Then cos P O Y will be equal to small p over r. This implies cos theta minus alpha is equal to p over r, which implies that p small p is equal to r cos theta minus alpha. तो ये हमारी वो इक्वेशन है, मीन टू से पोलर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की।